Okay, Bismillah Rahman Rahim. Dear students, today we are going to talk about uses of intelligence by Sun Tzu. The field of intelligence is, very important for a country, and this is very old concept. In modern times, you have seen, intelligence agencies equipped with all sorts of gadgets, bugs, support of satellites are all sometimes also there. So they use all these gadgets and all these things to carry out intelligence, extract information, which is necessary for their country to have an upper edge against enemy. So intelligence, the field of intelligence is very important for many countries, and historical, classical, you can say, realist and classical thinkers like um, Chankya Kotalia. Uh, these people were, they were there in the history, thousands of years ago, and these people actually gave the thought. Chankya Kotalia, Sun Tzu, and many other people, they talk about intelligence, the importance of intelligence, and we find the early trace of intelligence agencies in their tenure. So, in the when we discussed Chankya Kotalia, we came to know that Chankya Kotalia talked about undeclared war when he referred to intelligence agencies. So he said a country must be equipped with undeclared war. To fight undeclared war, they must have, they must rely on, reliable, spies, and the spy network must be, very strong. They must be reliable. They must be benefited more. Plus, Chankya Kotalia also said that use of women, for example, for honey trap, and many other things which we discussed in the class also. So today we are going to talk about Sun Tzu. What Sun Tzu says about intelligence agencies, and this is the base. Most of the things are well known to you in modern times, but this is the base we are studying: evolution of strategic thought, in which we are going to study the origin of intelligence agencies and the concept of intelligence agencies in the early period. So Sun Tzu says that if you know the enemy and know yourself, you need not to fear the result of 100 battles. This is very, very simple concept, and I have so many times in the class I have discussed this concept with you. Knowing yourself and knowing the enemy, knowing your own weaknesses, your own strengths, your strong points, your weak points, and same, knowing the weak points, strong points of your enemy. Only then you can utilize. For example, if you say that India, you want to carry out, intelligence operations against India, so you are going to analyze the weaknesses of India, and you are going to know the weak points of India, so you can utilize that. So what are India's weak points? Number one, Kashmir, for example. Number two, the eastern side of India, for example, Naxal Baghi, और वो जो जितनी भी सारी movements वहाँ पे चलती हैं, Maoist वगैरह, Naxalites जिसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह, Assam, Mizoram, Nagaland, all these, many hundreds of Indian states are, facing severe kind of Naxal insurgency. That is another weak point. There another weak point is in Punjab, for example, Khalistan movement. Although it was snubbed by the Indians in the 80s, but still these people, the Sikhs community, they are living in other countries like Canada. And if Pakistan tries a little bit, they could be trapped. So these are India's weak points, which you must know. And there are many other things. Poverty is there, which you can utilize. You can get as many as people you want. I interviewed a person who was intelligence attaché in India from Pakistan for my thesis, and he told me that he hired many poor Indians, for example, for money, and they were used for spying again, for Pakistan. Same is the case with India also. India also do the same. They also capitalize on Pakistan's weaknesses, for example. They know that we are facing socio-economic deprivation problems, issues, insurgencies in Balochistan and Fata.
and these are the weak points for them. They know that Karachi is a big country, but at the same time, Karachi can contribute more than 70% of Pakistan's, revenues. So they used certain elements in Karachi, and they created, serious crisis for Pakistan during 2009 and afterwards. Um, to curb that, Pakistan then carried out decisive military operations in Karachi also by Rangers, and killed and captured many raw trained fighters, sharpshooters. So this is the concept: know yourself and know your enemy, and you can win 100 battles. So this is the concept which the Sun Tzu gave in his time. Sun Tzu further says that they're raising a host of 100,000 men and marching them great distances entail heavy losses on the people and drain on the resources of the state. अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, ये उसकी बुक से मैंने निकाला है. Sun Tzu says that यार 1 लाख की फौज अगर उसको लेकर आप जाते हैं और एक डिस्टेंस तय करते हैं, फिर रास्ते में मौसम है, दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पहले लेक्चर में, आपको याद. और फिर उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर इतनी बड़ी फौज लेके जाने का, वो भी बहुत बड़ा होगा. उससे बेहतर ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए से, कुछ स्पाइज के जरिए से उस दुश्मन की वीकनेसेस को पहले से पता कर लो और उसको अंदर से खोखला करके उसको खत्म करवा दो. दिस इज अनदर बेस्ट थिंग. और उसकी क्लासिकल एग्जांपल आपको नजर आती है 1971 वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में, वेयर इंडिया ट्रेंड इंडियन रॉ ट्रेंड मुक्ति बाहिनी मिलिटेंट्स. 1,50,000 मुक्ति बाहिनी मिलिटेंट्स को ट्रेन किया. अपनी फौज को अभी नहीं लाए वो, ठीक है, और हमारे ही मुल्क के लोगों को ट्रेन करके उनको हमारे ही खिलाफ यूज किया. दिस वाज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंस वॉरफेयर. और हमारी जो वीकनेसेस थी उनको उन्होंने यूटिलाइज किया. सबसे बड़ी वीकनेस हमारी लॉजिस्टिक लाइन की वीकनेसेस थी. दूसरा, हमारी लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी थी अपने, वो थी. पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी थी हमारी. भुट्टो एंड मुजीब, they were fighting against each other. So these were the weaknesses and vulnerabilities of Pakistan which India utilized. और उसको उन्होंने effectively फायदा उठाया उसका और आपको डिसमेंबर कर दिया. So this is what Sun Tzu also says कि जी इतने लोगों को मूव करना, अपने लोगों को, वो आपके ऊपर रिसोर्स की बहुत ज्यादा वो होगा. तो इससे बेहतर है कि आप इंटेलिजेंस के जरिए से काम अपने चलाओ और ज्यादा से ज्यादा काम करो. जहां पे जरूरत पड़े वहां पे अटैक कर लो. The daily expenditure will amount to thousands of ounces of silver. There will be commotion at home, बेचैनी रहेगी abroad, and men will drop exhausted on the highways. ये सारी वही बातें कर रहा है कि इतनी बड़ी फौज लेके when you move, so all these issues would be there. So it is better. So आप उसको इंटेलिजेंस को यूज करो. अच्छा, ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त कहता है सुन तzu कहता है कि this foreknowledge cannot be elicited from spirits. कहते हैं ये जो नॉलेज, फोर नॉलेज है ना, दुश्मन की प्लान्स के बारे में, ये आप ये इनसे नहीं निकाल सकते, स्पिरिट से, रूहों से, जादू से, टोने से नहीं, उससे नहीं निकाल सकते आप. वो कहता है द फोर नॉलेज अबाउट द एनिमी कैन नॉट बी एलिसिटेड. एलिसिटेड मतलब निकालना, फ्रॉम द स्पिरिट्स, रूह से, किसी ये जो रूह होती है ना बदरूह, जादू टोने से. इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इंडक्टिवली फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉर बाय एनी डिडक्टिव कैलकुलेशन. एक और बात उसने की, वो कहता है ये एक्सपीरियंस से भी नहीं निकाल सकते आप, और ना ही इसको डिडक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन करके कि जी 2 + 2 4, अच्छा इंडिया अटैक करेगा, नहीं करेगा, नहीं. जब तक आपको उनके प्लान्स का पता नहीं चलेगा, जब तक आपको उनके प्लान्स का पता नहीं चलेगा, आप उनको नहीं रोक सकेंगे. और उसको रोकने के लिए यू नीड गुड इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और उसके अलावा जो आजकल बहुत सारे और भी तरीकाकार हैं इंटेलिजेंस के, जिसको आप कहते हैं ISR कैपेबिलिटीज, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज, थ्रू स्पाई सैटेलाइट, थ्रू UAVs, थ्रू अदर पॉड्स. अच्छा, तो एक ये हो गया, और इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है कि इंडिया वांटेड टू अटैक पाकिस्तानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन द 1980s. अच्छा, अब हम ये अपना सोच के बैठ जाए और कैलकुलेशन शुरू कर दें, कैलकुलेटर निकाल के, कि इंडिया ने हमारे साथ 1947 में जंग लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी, तो अब वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी खत्म करना चाहता है. ये हमारी अजम्पशन होगी, और हमें नहीं पता कि वो कब करेगा अटैक, कहाँ करेगा, कितनी फोर्स के साथ करेगा, कौन उसके साथ होगा, कौन से वेपन्स यूज कर सकते हैं.